आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कोड, बड़ी बड़ी मशीनें, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक अलग नजरिए से देखें, इसे समझें इंसानियत की एक सबसे बड़ी खोज के तौर पर, एक कृत्रिम मन की आवाज बनाने की खोज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या हमारे आज के सफर का गाइड बनेगा। हम साथ मिलकर ये पता लगाएंगे कि एक मशीन को सोचना, समझना और यहां तक कि हमारी तरह कुछ नया बनाना आखिर सिखाया कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। हम एआई के शुरुआती सपने से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये मशीनें असल में सीखती कैसे हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि वो हमारी दुनिया को कैसे समझती हैं, और फिर बात होगी उस रचनात्मक चिंगारी की। और आखिर में हम देखेंगे कि एआई हमारे हाथों में कैसे आ चुका है और कोई भी इस फील्ड में अपनी जर्नी कैसे शुरू कर सकता है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, एक सोचने वाली मशीन बनाने का ये आइडिया कोई नया नहीं है। दशकों से ये साइंस फिक्शन की कहानियों और यूनिवर्सिटी की बहसों में जिंदा रहा है। बस एक सपना था जो हकीकत बनने का इंतजार कर रहा था। तो फिर एआई का असली मकसद है क्या? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये उस मन की आवाज को मशीनों में डालने जैसा है। मतलब उन्हें हमारी तरह पैटर्न पहचानने, फैसले लेने और सबसे जरूरी अपने अनुभव से सीखने की काबिलियत देना। और ये सफर भी ना किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं रहा। सोचिए, 1956 में ये सिर्फ एक एकेडमिक आइडिया था। फिर 1997 में एक ऐतिहासिक पल आया जब IBM के डीप ब्लू ने चेस के बादशाह गैरी कास्परोव को हरा दिया। और आज सिरी और चैट जीपीटी जैसे टूल हमें दिखाते हैं कि एआई अब कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि एआई क्या है, पर अब असली सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। मतलब मशीनें सीखती कैसे हैं? चलिए इसके आर्टिफिशियल दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए जैसे एक के अंदर एक डिब्बे रखे हों। सबसे बड़ा डिब्बा है एआई यानी पूरा कॉन्सेप्ट। उसके अंदर एक छोटा डिब्बा है मशीन लर्निंग, जो मशीनों को डेटा से सीखने की कला सिखाता है। और फिर उस डिब्बे के भी अंदर है डीप लर्निंग, जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स से प्रेरणा लेकर सबसे मुश्किल काम करता है। मशीनें असल में दो मेन तरीकों से सीखती हैं। पहला है सुपरवाइज लर्निंग। मान लीजिए जैसे एक टीचर किसी स्टूडेंट को एक आंसर की के साथ पढ़ा रहा हो। मशीन को पहले से लेबल किया हुआ डेटा दिया जाता है, जिससे वो स्पैम ईमेल पहचानना सीखती है। दूसरा तरीका है अनसुपरवाइज लर्निंग, जहां मशीन एक जासूस की तरह काम करती है, बिना किसी मदद के खुद ही डेटा में छिपे हुए पैटर्न खोज निकालती है। अब देखिए, एक आर्टिफिशियल मन को सीखने के लिए उसे पहले हमारी दुनिया को समझना होगा। इसका मतलब है उसे हमारी भाषा, हमारी कही बातें और हमारी देखी चीजों को समझना होगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एआई को दुनिया को महसूस करने के लिए आंखें और कान देना। चलिए गूगल ट्रांसलेट जैसी टेक्नोलॉजी के पीछे का जादू समझते हैं। ये एक इंसानी ट्रांसलेटर की तरह ही काम करता है। सबसे पहले एनकोडर एक वाक्य पढ़ता है और उसके असली मतलब को पकड़कर एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बनाता है। यही असली कमाल है। ये वेक्टर किसी भाषा में नहीं होता, ये सिर्फ उस विचार का एक मैथमेटिकल रूप है। और फिर डिकोडर इस मैथमेटिकल आइडिया को उठाता है और उसे किसी भी दूसरी भाषा में शब्द दर शब्द बदल देता है। और जैसे एआई भाषा को समझता है ना, ठीक वैसे ही वो हमारी दुनिया को देख भी सकता है। इसे कहते हैं कंप्यूटर विजन। ये मशीनों को तस्वीरों और वीडियो का मतलब समझने की ताकत देता है। और यही वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे फोन में फेस अनलॉक को पावर देती है और सेल्फ ड्राइविंग कारों को सड़क पर सुरक्षित रखती है। अब तक हमने देखा कि एआई कैसे समझता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला बदलाव आया है, वो ये है कि एआई अब सिर्फ समझ नहीं सकता, बल्कि कुछ नया बना भी सकता है। ये है रचनात्मकता की वो चिंगारी। यहाँ ना एआई की दुनिया का सबसे बड़ा फर्क समझना जरूरी है। पुराना एआई, जिसे डिस्क्रिमिनेटिव एआई कहते हैं, डेटा को सिर्फ छांटने का काम करता था, जैसे स्पैम और जरूरी ईमेल को अलग करना। लेकिन नया यानी जेनरेटिव एआई एक कलाकार की तरह है। ये अपने सीखे हुए डेटा के आधार पर कुछ बिल्कुल नया, कुछ ओरिजिनल बनाता है। चैट जीपीटी की कहानियां और डैली की तस्वीरें इसके जबरदस्त उदाहरण हैं। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। एआई को एक प्रॉम्प्ट दिया गया कि एक भविष्य की कहानी लिखो जिसमें एआई एक पुराना इंसानी गीत खोजता है, और उसका जवाब देखिए। यूनिट 734 ने डेटा को प्रोसेस किया और उसमें से एक धुन निकली, एक नाजुक
इंसानी चीज़ जिसे ब्लूज़ कहते थे। पहली बार उसने एक ऐसी भावना महसूस की जिसकी वो गणना नहीं कर सका, विस्मय। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये कल्पना है, ये एक भावना है, और यही जनरेटिव एआई की असली ताकत है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ बड़ी-बड़ी प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। एआई अब हम सभी के हाथों में है। एआई हम तक 3 मेन तरीकों से पहुंचता है। पहले हैं स्टैंड अलोन टूल्स जैसे चैट जीपीटी, जो एक खास काम के लिए बने हैं। दूसरे हैं इंटीग्रेटेड टूल्स, जो गूगल डॉक्स जैसे हमारे पसंदीदा सॉफ्टवेयर में पहले से ही मौजूद हैं और हमारी मदद करते हैं। और आखिर में हैं कस्टमाइज्ड टूल्स, जिन्हें कंपनियां अपनी खास जरूरतों के लिए बनवाती हैं। तो ये सब जानने के बाद अगर कोई एआई की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करना चाहे तो कैसे कर सकता है? ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। ये सफर 3 आसान स्टेप्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहले पाइथन और गणित के साथ अपनी नींव मजबूत करें। फिर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझें। और आखिर में, जो सबसे जरूरी है, अपने सीखे हुए ज्ञान को असली दुनिया के प्रोजेक्ट्स पर लागू करें, क्योंकि असली सीख तो वहीं से मिलती है। और ये सीखने का सफर आपको कई शानदार करियर की ओर ले जा सकता है। कोई डेटा साइंटिस्ट बन सकता है जो डेटा में छिपी कहानियां खोजता है, या एक मशीन लर्निंग इंजीनियर जो इन एआई मॉडलों को बनाता और चलाता है, या फिर एक एआई रिसर्च साइंटिस्ट जो इस टेक्नोलॉजी की सीमाओं को और भी आगे बढ़ाता है। तो जैसा हमने देखा, एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है। ये उस मन की आवाज को समझने और उसे एक नया आकार देने की हमारी कोशिश है। ये अनगिनत नई संभावनाओं का दरवाजा खोल रहा है। तो अब सवाल ये है, इस नई दुनिया में हम कौन सी संभावना बनाना चाहेंगे? You know, it's pretty wild when you think about it. The same kind of AI that understands what you're saying to your smart speaker is fundamentally related to the AI that can whip up an email or even create a picture out of thin air. They're really just two sides of the same coin. So today, we're going to trace that incredible journey from how AI first learned to listen to us to how it's now learning to create for us. All right, so let's just jump right in with the tech that's, well, it's everywhere right now, isn't it? I'm talking about generative AI. This is the engine powering all those tools that feel like they're changing, pretty much everything, from art and music to writing code. So what is this stuff really? Well, this definition from Malaysia's National AI Guidelines actually nails it. It's all about training a model on just a staggering amount of data. Think about the scale of the entire internet. The AI sifts through all of that, learns the patterns, the structures, the connections, and then here's the magic part. It uses that knowledge to create something brand new. And the things it can create are, well, they're honestly astounding. We're not just talking about writing an email for you. As you can see, this tech can generate images, compose music, and even write software code that actually works. It's become a genuine digital creator. It's absolutely incredible stuff, right? But here's the thing you have to understand. This creative explosion didn't just pop up out of nowhere. No way. To really get how a machine learned to generate language, we have to rewind the clock a bit. We have to go back and figure out how a machine first learned to understand it. The whole journey, the entire revolution, it all starts with learning how to listen. And that's the core challenge we're talking about. Just teaching a machine to listen, to understand human speech. It's something you and I do without even thinking about it. But for a computer, for a long time, this was considered one of the hardest, most complex problems in all of AI. So the technical name for this task is speech recognition. And a classic AI textbook, Artificial Intelligence, A Modern Approach, puts it really simply. It's just identifying a sequence of words from a sound wave. That's it. It sounds so straightforward, right? But in practice, it is incredibly, incredibly difficult to pull off. Okay, but why? Why is this so hard for a machine? Well, a few big reasons. First, there's something called segmentation. See, when I'm talking right now, there aren't actually clean little silent gaps between my words. It's just one continuous stream of sound. A computer has to figure out where one word ends and the next begins. Then you've got co-articulation. That just means the sound of a letter gets smushed and changed by the sounds around it. The T in butter sounds different from the T in stop. And of course, you have homophones. Words like two, and two that sound exactly the same but mean totally different things. It's a real mess for a machine. So how in the world did engineers finally start to crack this code? Well, they were clever. They broke the problem down into 2 separate big pieces. First, you have to figure out the actual sound, and then you have to figure out the sense of it all, the context. And it all begins with the absolute smallest building blocks of speech, which are called phonemes.
A phoneme is just the tiniest unit of sound that can actually change a word's meaning. Think about the T sound in stick. The machine isn't hearing the whole word at first. Nope. Its first job is just to identify these tiny, individual pieces of sound. Okay, so once the machine has the sound, it has to convert it into something it can actually work with, which means, of course, numbers. So what it does is it captures the raw sound wave, and then it chops it up into these super tiny millisecond-long slices. For each one of those little slices, it creates what's basically a digital fingerprint. It's a process that turns the audio into a string of numbers. That beautiful, complex human voice just becomes a long stream of data. And this is where that two-part strategy comes back into play, with two different AI models working together. Think of it like this. The acoustic model is the system's ear. It looks at all that numerical data, that digital fingerprint, and its only job to ask, what sound did I just hear? What phoneme is this? But that's not enough because of words like two, and two. That's where the language model comes in. It acts as the brain. It's constantly asking, okay, based on the sentence so far, what word makes the most sense to come next? Then you can see here how that works. The system is basically mapping out all the possibilities. It's building this chain of probabilities, trying to find the most likely path from one sound to the next until it forms a complete word. So to get from the T sound to the O sound to the M sound, it's all about statistics. It really is a game of high-speed statistical detective work. Now, for decades, this general approach, it kind of worked. You know, it was functional, but it was also pretty clunky and it made a lot of mistakes. But then, starting around 15 years ago or so, a massive revolution in AI came along and just changed the entire game. Yeah, if you look back at the history, from the 80s all the way through the 2000s, everything was dominated by these older statistical methods. But then, right around 2009, 2012, this new thing called deep learning just exploded onto the scene. And the results, they were staggering. Accuracy went through the roof. It wasn't a small step forward, it was a giant leap. And pretty soon, deep neural networks were the only way to do it. They became the new state of the art. So what made it so much better? Well, this quote from the book Deep Learning really gets to the core of it. It says, "The higher level features are obtained through the composition of many nonlinearities." Okay, that's a bit dense, but what it means is that these new models could learn layers upon layers of abstract patterns all on their own. Instead of engineers having to hand code all the rules of language, the AI was finally learning the deep, complex structure of language in a way older systems just couldn't. And this is the most important part of the story. This is where everything connects. That huge breakthrough in teaching machines how to listen, that is exactly what unlocked the door to teaching them how to create. The two things are totally, fundamentally linked. I mean, let me just state that as clearly as possible. The same powerful deep learning architectures that finally cracked the ridiculously hard problem of speech recognition, those are the very same engines that are now powering all the generative AI tools we're seeing pop up everywhere. And this connection gets even more obvious when you look at one specific type of AI model that just took over the entire field. It's called the transformer. This architecture was just so unbelievably good at processing sequential stuff like language, where one word follows another, that it became the foundation for pretty much every modern language AI out there. And the list of things these transformer models can do it's just huge. We're talking text classification, answering your questions, summarizing a giant article for you, translating languages on the fly, and the big one for our story today, they can generate brand new text from scratch. And this right here, this is the final beautiful insight that ties it all together. Remember that language model from speech recognition? Its whole job was to get really, really good at predicting the next word in a sentence. Well, the big aha moment was realizing that if a model is that good at predicting, you can just turn it loose and ask it to start generating. You give it a starting word or phrase, and it just keeps predicting the next most likely word, and the next, and the next, and boom, you have a new sentence. Understanding wasn't just a parallel skill. It became the direct foundation for creation. So yeah, we've really come full circle, haven't we? We started with the incredibly difficult task of just getting a machine to listen, to understand what we're saying. And in solving that problem, we accidentally unlocked the ability for it to create right alongside us. The quest to understand language is what gave us the tools to generate it. Which leaves us all with a pretty huge question, right? Now that we finally taught machines our language, what on earth are we going to ask them to say next?